Alright, I guess we are live. Let me quickly see. Alright, I guess we Yep. are live. ऑलराइट दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक और लाइव स्ट्रीम में, जहाँ पे वी आर बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। और कल हमने दो दो क्या दूसरा अपना एमवीपी फीचर बिल्ड कर लिया था, कमांड्स। एंड वी आर एबल टू हर कमांड के लिए जो भी उसका पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव वो है आउटपुट, वी वर एबल टू अचीव दैट। टुडेज गोल इज trying to achieve terminal actions, which will be our third MVP feature. So basically, when you press let's say pwd is a command, right? Whenever you press an up key, you get whatever previous command you have wrote, and if you press down key, you come back to the newer command. Let's say if I press it two times, it went to cd because I ran cd before that. And when I press down arrow, it comes to pwd. Another down arrow, whatever I had written. Also, try to see, let's say I wrote something. Yes, yeah, I haven't run this command. I go up, I come back. So terminal also remembers what I have written. So that is also something we'll try to achieve. ठीक है दोस्तों, तो let's start without wasting any other time. तो या तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, विल बी per branch per feature. So I created this branch yesterday only, I guess, and currently I am in MVP03 branch. So I guess we'll have to start from event listener itself, because this is where whenever we press any key, whenever we are in the input dialog box, our input box, and whenever we press any key, that is where we go, right दोस्तों? uh, not you, right? So this is where we go. For example, let me quickly show you console dot log. Anything you press, let's say event dot target, array, target dot value, and whenever you press any key, you come here. See, you come here. Of course, there's a lag of one key, but that is great for us because whenever we press, we'll press up or down, we'll get the exact data of what we have in our input tag, right? As you can see. So what we are gonna do is we are gonna okay, this is just tells us the value. We need to know what key, or basically what string we get when we press arrow key. Okay, nothing. Quickly refresh it. Okay, so this is the string what we get. So this was our if command whenever there was a enter key, right? So at a time user can only press one key, right? How about we do this, right? And we implement all our arrow up thing here. We'll quickly delete this because you don't need that. So the approach here, what I'm thinking is, it, see, we don't need to keep the whole track के एक यूजर ने आके कितना ज्यादा बार कितनी कमांड्स दी, because whenever the user shifts to another page, right, so he should be getting, I mean, that's up to me. So what I have thought is
I will use session storage. So those of you who don't know, you should be aware about session storage. आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, right? So I mean, I'll just quickly put this in chat. I believe this is the right link, right? Hmm. Yep. तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. So this is what we are going to use today. There's another alternative which is local storage, but I'm thinking of going with session storage. So what we are going to do is whenever a user, सबसे पहले we will implement the first thing. Whenever user writes any command, right, and he presses enter. So this is when this command gets stored somewhere, of course. We don't know what happens at the terminal. So this is the command which I need to store. So what I'm gonna do is whenever the user presses enter, right? Whenever the user presses enter, I'm gonna store something in my session storage. I'll call it commands history because it keeps the history, right? But what is the value which we need to store here, right? So what is the value that we need to store? Whatever is written in this input element. So what we are gonna do is parent element will take, and we are gonna do a query selector all, so that I mean there can be multiple inputs, right? So will have to store the value of the last one only input, and this will be a list of input elements, right? अब इसमें इनपुट एलिमेंट्स में जो भी हमारा लास्ट आइटम होगा डॉट लेंथ -1, उसकी जो भी वैल्यू होगी दैट इज व्हाट वी आर गोना सेव. बट अगर हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो क्या होगा, जो भी लास्ट का वैल्यू होगा वो आएगा और वो पिछले वाले को, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू, वेस्टिंग माय एनर्जी, राइट? Let's quickly refresh, go to the network, not networks tab, you go to the application tab. Yeah. So let's say we wrote hello, we got hello, which is right, but partially. How is it wrong? How? It updated the how here. So whenever the user presses up arrow key twice, first he'll come here, but how will we come here? So we will have to keep a track of every command, right? So what we are gonna do is let's create an array const const commands array, right? And we are gonna fetch session storage dot get item commands history. Also, if we'll go through this, the link I posted in the chat, उसमें क्या है? The thing is, एक सेकेंड, या उसमें क्या है, गेट टू नो कि आप यहाँ पे कस्टम डेटा स्ट्रक्चर सेव नहीं कर सकते हो. द ओनली थिंग यू कैन सेव इज स्ट्रिंग, राइट? So we have an issue. We just cannot simply drop an array here. तो थोड़ा सा चीजें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी हमारे लिए. But why fear when I am here? Commands array, and we are gonna get the every item which is in the list, and we are gonna do json dot parse
तो इससे क्या होगा, जो भी इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू सेव होगी वो हमें इसमें it will basically convert string to, right, and this gets us the whole command array. Now commands array में we'll have to push this value and we'll gonna put json dot stringify, not you, commands array. तो कमांड्स एरे को बेसिकली स्ट्रिंगिफाई कर देता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड इट विल सेव इट द कमांड्स एज a string. And what does JSON parse do? Does the opposite. It basically breaks a string into an object, which is array in our case. So we'll quickly delete this, we'll quickly refresh, and we'll see. Hello? Okay, we got some error. JSON.parse is not a function or it's written well. Okay, of course. So as you can see, at the very first time, there is no key, no value. There's nothing here. So that is why we can be getting error here. So what are we gonna do is, this is fine. We'll do a quick check if session.storage get item. If this exists, then we have no issues. But if this does not exist, in that case, okay, we'll do one thing. Const equals to array. Right. We'll declare an empty array every time. We are gonna, okay, sorry, commands array. Of course. Wait a second. Commands dot array is equals to, if we have any item in this as commands history, great. What we are gonna do, we are gonna update our array and we are gonna push every value in that, right? After that, commands array is gonna push the latest value of the input element and then it's gonna save. And let's quickly see if this works. Hello. Yep, we got our first value. Now, how cool are you? Great. तो हमारे को सारी वैल्यूज मिलती जा रही हैं, which is great. But how are we gonna fetch what is needed? So we are gonna keep a track of an index element as well, which will be doing same thing here. Let command index is equals to 0. हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे और अगर हमारे पास कुछ है और जब हम पुश करेंगे तो इन कमांड इंडेक्स को एक से बढ़ा भी देंगे. एंड सिमिलरली व्हाट वी आर गोना डू, कमांड इंडेक्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की जरूरत नहीं है इधर, एंड सिंपल. हाँ, अगर हमारे पास वैल्यू है तो वी ब्रेक दैट, so nothing to do with this. Command index से we will save the value. Initial value is 0. Hello. Right, first element, we got one element here. This basically keeps a track of how many elements we have. Hello, how? Oh, something is wrong here. हाँ, yes. कमांड इंडेक्स को हमें पहले बताना भी तो पड़ेगा कि उसकी कितनी वैल्यू थी, राइट? तो सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, command index, and we will pass this as an int, क्योंकि
टोल्ड यू राइट, सेशन स्टोरेज में सब कुछ स्ट्रिंग रहता है, राइट. Let's quickly delete this, refresh this. Hello, how are you? Great work. Right. तो हमारे को we are always getting a track of the index. तो बेसिकली क्या होगा, अभी ये इंडेक्स वर्क पे पॉइंट कर रहा है, राइट. सिक्स्थ एलिमेंट विच इज वर्क. नाउ द गेम स्टार्ट्स, द रियल गेम स्टार्ट्स. Arrow up. So what we are gonna do when someone will press the arrow up, we are gonna uh, document dot element, get element by id. We are gonna of course we need this, and dot query selector all input const input elements. बट अपना कंसर्न सिर्फ एक ही एलिमेंट से होगा, विच विल बी द लास्ट वन. तो तो input elements is an array, right? Input elements dot length -1. This is the last element. इसकी वैल्यू हमें अपडेट करनी होगी बेसिकली, राइट. बिकॉज व्हेन यूजर प्रेस द एरो अप, यूजर इज हियर, राइट. He is writing something or not, I don't know. So whenever he presses arrow up, this value should come here, right? So what will this value be? So not document, session storage dot get item, and we need commands history, but this is a string, so we need to parse it first. JSON dot parse. Now this has become an array, but we need the last item. So we are gonna take this session storage dot get item, command, what was the name, command index. But again this will be a string, so parse int. Right, this looks good. Ab, here comes the tricky part for you to understand. Let me quickly show you rather than just saying anything. Hello, how are you? अभी यूजर जैसे ही ऊपर वाला बटन दबाएगा, of course we got an undefined. Why? Because this is an arrow and it starts from 0, 1, 2, 3 and 4th. Now 4th element we don't have, but the index is 4, right? So it is giving us an error. So we need to fetch us -1, but at the same time we will need to decrease the counter as well. Why? Because मान लो यहाँ पे u आ गया, यूजर ने अप एरो दबाया, u आ गया. अब उसने अगर दोबारा अप एरो दबाया तो अभी काउंटर फिर यहाँ होना चाहिए ना, ताकि वो उससे पहले की कमांड देख सके. तो दैट्स व्हाई वी नीड टू
decrease the value by 1. Session.storage set item command index parse int all of this, and it goes here. I'll tell you what I'm trying to do. Just give me a second. Hello, how are you? Right now, see the magic. We'll press up key once. U, ठीक है, which tells अब अपनी next command is 1 अब दबाएंगे R, ये डिक्रीज हो गया. एक और अब दबाएंगे how, hello, and undefined. Why? Because -1 आ गया. तो we need to at some point, of course there will be an end of command, तो वहां पे हमें चेक करना होगा कि if that thing is, ये जो काउंटर है हमारा, this should always be greater than 0 for us to perform this action. quickly check करें. Hello, how are you? One up, one up, one up. How, hello. अब इसके आगे it should not go anywhere, and it is not going when because I'm pressing an up key, right? तो नहीं जा रहा, which is great. Now when we press the arrow down, ये क्या हो गया दोस्तों? Okay, okay, yeah, sorry. Similarly, we'll have to implement arrow down. So this is a leap of faith, right? अब यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे एक आगे का कमांड दिखाना पड़ेगा और इसमें एक प्लस करना पड़ेगा हर बार, राइट? और ये कंडीशन ऑफ कोर्स चेंज होगी, बट कैसे वो भी देखेंगे अभी, क्योंकि मेरे को भी अभी थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा, मेरे को भी पता नहीं है, बिकॉज दिस इज spontaneous. I'm thinking in my mind and developing it. ऐसा नहीं है कि मैं पहले से पढ़ के आया और समथिंग, राइट? यहाँ तक सही है, एक ऊपर गए और ऊपर गए और ऊपर गए और ऊपर गए, सही है. अब अगर हम नीचे आते हैं तो नथिंग हैपेंड. व्हाई नथिंग हैपेंड? अरे यार क्या हो रहा है ये? हाँ, if parsing second is okay. So as of now, let me quickly just remove this command, and we are gonna refresh it. Hello, how are you? ऊपर गए you are how, hello. नीचे आएंगे तो how, बहुत सही, are you and undefined. तो जब it comes to fourth, which is equivalent to command's history length, then we should not do it more, क्योंकि उसके बाद वो undefined ही रहेगा. तो पार्स इंट, जब ये नंबर बड़ा हो जाए, छोटा रहेगा जब तक, किससे? json.parse session storage get item command history dot length th. जब तक वो उसकी लेंथ से छोटा रहेगा तब तक ही we will run that, right? Quickly refresh it. Let's see how it goes. Hello,
how are you? Up की works great. नीचे आओ, undefined. Right. So in case of undefined, see, काउंटर नहीं चेंज हो रहा है अपना, काउंटर नहीं चेंज हो रहा है, विच मीन्स हमने यहाँ तक तो सही इंप्लीमेंट किया, बट अब अनडिफाइंड हमें 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 अनडिफाइंड का फिगर आउट करना होगा. तो आइडियल केस में इट शुड बी ASDF, वॉट एवर आई हैव रिटन, आई गो अप एंड आई कम डाउन, इट शुड कम बैक, राइट. ओके, तो व्हाट वी कैन डू इज, जब पहली बार एरो की दबता है, राइट, तो जब पहली बार एरो की दबता है तब हमारा जो वो है कमांड का, वो जब तब चला जाता है, देन वी स्टार्ट शफलिंग एंड ऑल, राइट. राइट, तो जब वो पहली बार अप की दबेगी, जब वो पहली बार अप की दबेगी, नाउ तो irrespective of if we have pressed enter or not, कि हाँ मैंने नहीं फर्क पड़ता एंटर दबाया या नहीं, मैंने सीधे अप की दबा दी, राइट. तो मैं जब अप की पहली बार दबाऊंगा तो क्या चीज होगी जो ट्रू होगी, हाँ, दिस वैल्यू would be equal to command index. That is when it's gonna happen. So if event key is equals to arrow up, right? If uh, if JSON dot parse, okay, it's equal, जब लेंथ और इंडेक्स बराबर होंगे, दैट इज व्हेन हमारी पहली बार वो दबेगी की. तो एट दिस मोमेंट वी नीड टू सेशन storage dot set item current command, and we gonna set it, what we are gonna set it, we are gonna set it the value of this. इसको फिर अंदर नहीं आया क्या, दो बार नहीं करना पड़ेगा. इनपुट एलिमेंट का जो लास्ट आइटम होगा, कैंसिल, इनपुट एलिमेंट्स का जो लास्ट आइटम होगा उसकी जो वैल्यू होगी, दैट इज व्हाट वी आर गोना सेट. लेट्स क्विकली सी इफ whatever we have thought. Hello, how are you? Now we press the up command, great, and we just got what we wanted, and it came undefined. We'll figure that out as well, but SDF, correct, right. Now undefined आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने जब एरो डाउन की दबाई यहाँ पे, तो हमने जब वैल्यू सेट की यहाँ पे, इस केस में और कर देंगे session storage dot get item, and now instead of this is gonna be current command. Now we are gonna refresh. Hopefully this should work. Hello, how are you? ASDF. I don't know, I haven't pressed enter. I go up, you very right. Our hello, how great. We come down, are you? ASDF. और इससे नीचे वो जाएगा नहीं. It works great. ASDF. Let's. I mean, I press it again. It updates and it shows the, and we achieved it. Enter. Right. Okay. Now we'll check for real commands. Of course, दोस्तों,
अगर आप पहले से देख रहे हो ये तो आपको पता होगा, मैंने कमांड सब लगा दी, बट आई जस्ट रियलाइज कि हमने डिफॉल्ट सेट नहीं किया। आई मीन दीज आर कमांड्स आर नॉट अवेलेबल इन आवर CLI, राइट? तो इन सब कमांड पे कुछ एरर आना चाहिए, जैसे वी गेट एरर इन अपना टर्मिनल, राइट? बट वी आर नॉट गेटिंग, सो वी हैव टू फिगर दैट आउट एज वेल। हेल्प अबाउट about skills. Now I want to go above, I want to run about again, right? And help, of course it went wrong. Handy, wait, why skills क्यों run हुआ? तो गड़बड़ है दोस्तों। यू आर सेइंग कि यहाँ पे टाइम इंडेक्स पर है, अच्छा। ओके, आई गॉट इट, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ दोस्तों, जरा काउंटर पे ध्यान रखना। हेलो, सही, हाउ, सही, आर, सही, यू, यहाँ तक बिल्कुल सही। मैंने एक ऊपर का बटन दबाया, यू आ गया, ये सही है। मैंने आर दबाया, ये सही है। मैंने एंटर दबाया, अब ये आया 3, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था 5, राइट? तो what is wrong here is when I pressed enter, it should refresh. It should refresh and it should start the counter from start. Not, I mean start 0 से नहीं, it should start from के यहाँ पे अब 5 एलिमेंट है, अब हमारा काउंटर यहाँ पे आ गया है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, when we press enter, तो जो हम कमांड इंडेक्स ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि ये काउंटर तो चेंज होता रहता है, राइट? व्हाट वी कैन डू इज कमांड एरे का लेंथ दे सकते हैं, and I believe this should be fine. What is the error? Hello, how are you? Up, refresh 5. We did it. We did it. We did it. We did it. Help about skills. I go up, I go above, I run the command again. Now about skills, skills about help. We did it, friends. Alright, so I guess we implemented this as well, right? So we are gonna close this, and yep, I'm so happy, I can't tell you. This was so easy, right? This one was very easy to build. I mean, of course, if you know these things, session storage and all, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा कि जो समझ नहीं आया, आप मुझे बता सकते हैं। I can either I'll come to you in comments to explain you, or maybe you can I can help you with that. Now all that is left is two things. First is uh, doing this default thing. We'll have to write something here for default. मैं कल लिखना भूल गया था। And second is ये बहुत गंदा सा कोड है, because it is not here. सी मैं एक ही चीज दो बार फेच कर रहा हूँ, कमांड हिस्ट्री गेट आइटम में मैं 2 बार क्यों फेच कर रहा हूँ, राइट? तो लेट्स क्विकली इम्प्रोवाइज इट, बट क्विकली गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। I just wanna
Why is this 0.24? Yeah, I forgot to do the npm version. Okay, never mind. Let's do it now. cd at macros portfolio npm version 0.3 because it's third feature and इसका first release. Hmm. So commit and push quickly on branch. Yeah. So third MVP feature implemented. Root conditions for arrow up and arrow down implemented. Now let's quickly, because this is just raw, so we need to improve one. So we quickly do it. इसको fetch करते हैं. Control X. But that is the whole thing, right? If it is exists, if it exists, that's when I break it up. Can I do something like this? No, this will be implemented this way only, and we did this. This looks fine. This looks fine to me. I mean, दोस्तों अगर इस we can do something else about it, please let me know. Please do tell me, right? Because I'm not perfect. I'm here to learn and of course build in public. So please do let me know if there's something better of implementing that. बाकी let's see. ये तो बहुत बार कर रहे हैं. ये तो definitely we can improve. Also, let's see. Parse int const command index is equals to, let's see, control C, control D, control D, control V. Right, quickly save it and delete it. यहाँ से कमांड इंडेक्स उठाए, यहाँ से सारे इनपुट एलिमेंट्स खींचे, सेशन डॉट स्टोरेज गेट आइटम कमांड्स हिस्ट्री, इसका जेसन डॉट पार्स हम बहुत बार कर रहे हैं. These 2 times we are doing it here, right? अच्छा, only once यहाँ पे लेंथ ले ली, अगर वो उसके बराबर है तो we fetched, we just set एंड इसके अंदर उसकी वैल्यू डाल दी करंट कमांड में थी, क्या इनपुट एलिमेंट्स का वैल्यू जेसन डॉट पार्स कमांड हिस्ट्री. कर तो रहा हूँ यार, 2 बार कर तो रहा हूँ. सी
const command history is equals to, इसको array रहने देते हैं, json dot parse command history, json dot parse command history and -1 size, port size. अच्छा, one quick check, do a quick check here. हाँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ, I press up down, so it does break, it does break, it does break, it does break, it does break. तो देखना होगा ये कि up की पे तो it is not breaking, but if I'm pressing down key, it is breaking. So we'll look into that. All right, looks good so far. Yep. Similarly, अगर ये इसकी लेंथ से छोटा है and it should exist, either command index or something, whatever it is, it should exist. Then only you are gonna go inside of it and you're gonna do something here. Mm, yep, quickly see. And if I'm pressing up key, nothing is happening. If I'm pressing even, why is it breaking? No. Let's see. What is it saying? अच्छा, अरे यार नहीं ना, तो सही रखना. Okay, okay, okay. Because this is nothing. That's why it is breaking. Let's see. I just put a question mark here. Well, it's still break. It is not. And this is what I was thinking of doing earlier as well. Let me quickly go to the upper right. Now session.storage get command history. ये पूरा ले लो, इसको कट कर लो, इसको कर लो ये, और अगर if this does not exist ये कर दो. Simple, right? Similarly, commands array dot length कर लो, and if it does not exist, 0. Simple. See, there will always be a commands array length. If you look at it closely, right? क्योंकि हमने ये तो असाइन कर ही दिया ना, right? Now we don't need any of this. कमांड्स array में पुश किया, इसमें पुश किया, इसमें सेट किया, इसमें सेट किया, and we are good to go. This was something which I was trying to do earlier. Up key, up key, up key, low key, no key, no, nothing. Help, something broke. Let's see. JSON.parse is not a function. It's return values. Okay, it looked for this, but it did not get anything. Session start. इसको अगर मैं करूँ कॉपी अपने को, and if I check if this exists, then do this.
नहीं तो do this. Does this work? Come on, this has to work. up की arrow की help. Yeah. आई बिलीव दोस्तों आप समझ गए होंगे हमने क्या किया. हमने चेक किया कि अगर ये एग्जिस्ट करता है क्वेश्चन मार्क, इट्स अ टर्नरी ऑपरेटर, तो उसका जेसन डॉट पास करो, एल्स गिव इट अ ब्लैंक एरे, है ना. एंड नाउ वी आर गोना सी इफ दिस वर्क्स, राइट. हाउ आर यू माय फ्रेंड. वी आर गोना डू up. Yes dear, my friend, my great. So this is where we shoot the command npm version 0.3.2, राइट. क्योंकि हमने यहाँ पे इम्प्रोवाइज किया है द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस. quickly push it to the GitHub. We can push. Improvised implementation of third feature. Now the bug from here, default. So if we go command values में जाएं क्या. कमांड वैल्यूज में बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज हियर इज यहाँ पे कमांड्स का सारा रिटर्न है, राइट. तो इफ आई डू अ डिफॉल्ट हियर, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस dot inner text, and let me quickly just this. What is a general command? Node help. Node is not defined, of course. Tell me a command which is not right. Uh, uh, let's see. तो क्या बोलते हैं, हाँ. Command not found would be great, right? Command not found. पहली लाइन क्या आती है हमारी. Hmm. Is that right, my friends? Cool. Also, when you look at it, commands list JSON हमें नहीं चाहिए. For some reason I created it at first, but we don't need this anymore, right?
And this whole event listener is way too big, right? So what we can do is we can just break it into smaller components so that it's easier, right? Commands value.jsx. Even this should not be a JSX because this is basically just some functions returning some values. Essentially, and I believe this should still work fine. Date time JSX is absolutely right. Well, it's always a string, right? Or skill node. I mean, it's max, right? String, string, string. तो हम क्विकली टेस्ट करेंगे. Of course. बट कमांड्स वैल्यू डॉट जेएसएक्स मैंने इंपोर्ट कहाँ कर रखा है ये भी तो बताओ. एक ही जगह तो है तो सही कमांड वैल्यू डॉट जेएसएक्स. But I did not say it would be a JSX. Never mind. I'll quickly just JSX ही कर देते हैं. Because for some reason he's so yeah. Alright दोस्तों तो we fixed the bug as well. Deleted that file. All I'm thinking is to break it into smaller pieces. करने का भी. Wait, but first we upgrade it. npm version 0.3.3. Fix bug from second MVP feature. Default case was not implemented. Fixed that. Not a bug or more of a oversight. Commands list is not needed as of now. I mean, no one knows what future holds. Yeah, that's pretty much it. And yeah, now let's quickly try this. Oh यार वो भी तो एक्स करना था. शिट. इसको भी तो करना था ऐसे. ये हमने कर लिया है. More or less our project is becoming coming to life, right? हर चीज दिख रही है. I mean CSS नहीं हो रही है बाकी पर implementation बराबर चलते जा रहा है, right? Let's see. Let's create a function. Let's create a function for enter key dot js. Of course, we need all of this. And I need the event here.
Will this work? Quick question, friends. Will this work? Help. Okay, bro. On key down is not defined. On key down is not defined. What are you kidding me? अच्छा. Import on key down. But is that our default here? That's the default. If this is the case, why not arrow up key? And all I need is an event. Similarly, arrow down. Help works good. Okay, arrow key is down is not working. एक सेकंड दोस्तों. मैं एक सेकंड में आया दोस्तों. ठीक है, एक सेकंड में वेट करें.
ऑलराइट दोस्तों, सॉरी थोड़ा तो काम आ गया था, पापा बुलाते। बट एनीवे, अपना तीसरा MVP फीचर इम्प्लीमेंट हो गया, राइट। ऑल्दो दिस थिंग इज गिविंग सम एरर, आई डोंट नो व्हाई, तो मैं इसको एक बार ऑफलाइन देख लूंगा। अगर फिक्स होता है तो ठीक है, दैट्स ग्रेट। एल्स विल गो बैक टू व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर। यहीं पे लिख देंगे सारा कोड, बाकी देखते हैं कैसे होता है, क्या जाता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज की स्ट्रीम को इतना ही रखते हैं। हमने थर्ड MVP फीचर इम्प्लीमेंट कर लिया है, राइट। बाकी विल स्टार्ट विथ फोर्थ टुमारो। टर्मिनल टाइटल बार बटन्स, बेसिकली जो अपना टाइटल बार के 3 बटन्स होते हैं, ये 3 बटन्स, इसकी फंक्शनैलिटी को विल ट्राई टू फिगर आउट कैसे कर सकते हैं, तो देखने जरूर आइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे कल, ठीक है दोस्तों, राधे राधे।